होता है, यू विल लर्न ओनली सी लैंग्वेज, ठीक है। एंड उसके बाद करिकुलम में यू विल बी बिजी सो मच। और उसके बाद ऐसा सीन होता है हमारे कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस। सो वेयर डू यू गेट द टाइम? टाइम मिल रही है असाइनमेंट, होमवर्क, ये वो। तो फॉर सेकेंड ईयर तो तुम्हारे ऐसे निकल गए। You check out in your campus itself, there will be very few people in first और second year जिनको C प्लस प्लस अच्छे से आता हो। पाइथन मैं बोलूंगा नहीं, बिकॉज पाइथन इस क्लास 12 में सब पढ़ के आ रहे हैं। C प्लस प्लस किसी को नहीं आता, ना इधर किसी को ML आ रही है, वेब डेव की फ्रंट एंड नहीं आ मथुर रही में है। कितने का होगा 1540। मथुर में पता नहीं 2 बार गए थे, एक बार तो सर्वर उनका चल नहीं रहा था। Mayank, Please turn off your Mayank, mic. you can mute yourself. So Rohit, इसीलिए like you can say that Google has taken this initiative. दिस क्लब Yes. विल प्रोवाइड यू लाइक मैनी। देखो तुम पूरे ईयर में, आशीष तुम्हें बताएगा, जैसे इसमें एंड्रॉइड के कैंपेन्स होते हैं, क्लाउड के कैंपेन्स हो रहे हैं, ML के कैंपेन्स हो रहे हैं, वेब के कैंपेन्स हो रहे हैं। तो एटलीस्ट इन ए स्टूडेंट हु इज इन हिज फर्स्ट ईयर, हु इज कनेक्टेड टू JDSE कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, इन वन ईयर ही कैन अंडरस्टैंड दैट मेरा इंटरेस्ट किस डोमेन में है। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट नो दैट योर डोमेन, व्हाट्स योर डोमेन, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर लाइक कि उन्हें कौन सा डोमेन चूज करना है। अच्छा, उन्होंने वेब डेव किया, वेब डेव के साथ करते करते इंटरेस्ट नहीं आ रही, 6 महीना वहां वेस्ट किया, 6 महीना वेस्ट करने के बाद फिर वो स्विच कर रहे हैं एंड्रॉइड पे। सो इजंट GDSE इज अमेजिंग? लाइक आपको 1 ईयर में, अगर एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट देख रहा हूँ मैं, एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट देख रहा हूँ, तो वो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। बिकॉज ही इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ क्लाउड, ही इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में कोटलिन भी सीख रहे हैं, फ्लटर सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग सीख रहे हैं, वेब डेवलपमेंट है, साथ ही साथ बहुत सारे स्पीकर सेशंस होते हैं। आई गेस मतलब ये एक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा टर्निंग पॉइंट है। यू आर गोइंग टू इवेंट्स, यू आर मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, सेम इंटरेस्ट वाले लोग मिल रहे हैं। Yeah, लाइक Mark, पर्सनली, I'm या currently, sorry to interrupt you, या but यस, I'm currently in fourth year. So how this is beneficial for me, right? see, yeah, fourth year. So for Yes. that, I'll tell you. See, in whole 1 year, you can build up your connections, which will be beneficial for your referrals. You can build up those connections who are working as a SD in big companies. At least, ठीक है, in 1 year you can't do anything. I assume it, बात की बात. But at least you Yes. got the roadmap. लास्ट 3 इयर्स में तुमने क्या किया नहीं किया वो तो चेंज नहीं हो सकता। बट इस एक साल में यू आर मीटिंग दोस folks who have done something and who are guiding people, right? ऐसा Yes. तो कहीं लिखा नहीं है कि फाइनल ईयर में आके आपको बहुत देर हो गई। DSA लोग 2 साल में भी सीखते हैं, DSA लोग 6 महीने में भी सीखते हैं। देर इज नो Yeah. Yeah. बाउंडेशन। कहीं पे ऐसा लिखा नहीं है कि 6 महीने से पहले DSA नहीं हो सकती, राइट आशीष? Yes. Right. तो बेसिकली अगर इफ आई एम टेकिंग यू एज लाइक फोर्थ ईयर अभी स्टार्ट हुआ, if you are Yeah. starting DSA in 3 months, I'm assuming that you are a full stack developer. You completed your full stack development and plus DSA in 6 months. अब यहाँ Yes. से you are hunting for job. Right now, you know the recession criteria. इसकी वजह से जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनको layoff का झेलना पड़ता है. So in this time, if you are connected with a well-known person, example, someone who is working at Make My Trip as a uh, SD2, and you have a good chit chat with him in DevFest or any other event, and you know him like quite well, अच्छे से बातचीत हो रही है, so you can ask him referrals, and you know that referrals have a weightage because most of the students, they don't clear the ATS round. The major problem is that in big companies. So as a final year student, as a third year student, I feel that JDSC will be contributing something or the other. As a first and second year student, it will be booming in their early careers. As a third and fourth year student, it will be helping you to build a peer connection. Okay, fine. I'm assuming it. ठीक है, third year, fourth year भी निकल गया. But at least these connections will help you after 2 years of your job. You will be switching it, right? तुम जाकर TCS Yes. में for 20 years काम तो करोगे नहीं,
it's not but possible, right? exactly. So these connections will at one point or the other will help you, that I need a referral, I need a guidance, I need a, like, what's the interview process, what's the criteria, how can I fulfill in this, how can I fit, if there is any internal hiring. बहुत सारे ऐसे फैक्टर है ना ब्रो, जो कि थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर को भी बहुत हेल्प करेगा. Yeah, I got your point. या आई गेस योर Yeah. डाउट इज क्लियर. Yes. या दैट्स ये ग्रेट. डाउट काफी लोगों के मन में होगा, लेकिन वो पूछ नहीं पाते। रोहित की वजह से सबका डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि ये डाउट एग्जैक्टली. ऐसा है जो सबके मन में होगा ही। एग्जैक्टली एंड रोहित ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला. लाइक सी, या फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही ज्यादा वाइडर स्कोप है. इफ आई स्टार्ट देन इट विल टेक 1 आवर कि तुम्हारे ये बेनिफिट है वो बेनिफिट है. बट बीइंग अ थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, जहाँ पे ऑलरेडी यू आर फेसिंग द एंजाइटी, प्लेसमेंट नहीं मिल रही, प्लेसमेंट छोड़ दो, इंटरव्यूज नहीं आ रहे ना, इंटर्नशिप हो रही, रेजिस्ट्रेशन अलग हिट कर रहा. तो उस टाइम में दिस इज लाइक, चलो ये इंट्रोड्यूस हो रहा है बट व्हाट्स माय एडवांटेज, व्हाट्स, मेरा क्या फायदा है. So this is something I feel that Rohit has raised a very good question. या I saw, I say someone else also, he raised up his hand when Rohit, I can't recall the name. Like it's great guys if we come, if we interact ना, because speech देना, या मैं एक एक लाइन 2 पेज का स्पीच तुम लिख के पढ़ते हो नहीं आऊँ, समझते। हाँ पढ़ के आऊँ, पढ़ दूँ, तुम्हें कुछ समझना है, तुम बस सेशन के लिए करते हो, कोई फायदा नहीं है. लाइक इट, इफ यू हैव एनी डाउट्स कि हाँ ये चीज बता दो आप, ये चीज है, इट विल बी मच feasible for you also and for the community too, because this is what JDSC is about: connect, learn and grow. क्योंकि मेन मोटिव जो है वो सेशन कराना नहीं है, मेन मोटिव जो है वो हमें चीजें सिखाना है। Exactly. Ashish, am I audible? या यू आर। Yeah, you are audible. Okay. Ashish, that's a question suit for you. How can I be a part of JDC? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप। गिव मी 1 minute actually, there is some, I got my going to repeat। हेलो। Yeah, Ashish, you're audible. या इट्स ओके। तो यू कैन जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप एट, यार मुझे मेरी वॉइस रिटर्न आ रही है एक्चुअली। कैन एनीवन एक्सप्लेन फ्रॉम द टीम? आशु, गौतम। Yeah, hello. Hello. Am I audible? Yeah, you're audible. या Go ahead. You are audible, भैया. हाँ, क्या क्वेश्चन था अरमान आपका? किसी का Sanjana क्वेश्चन had था a, कि वो जीडीएससी हाँ, कैसे ज्वाइन कर सकता है। yeah. Please check the chat box and please tell her about the process. Like as a member, as a core, what she wants. Just Okay, how can I be the part of GDSC? So ये पूरा 1 साल का टेन्योर होता है, जो हमारा 23 to 24 है, 2024। इसमें आशीष चंचल एज ए लीड काम करेगा हमारे साथ, और हम एज ए टीम मेंबर काम करेंगे। तो अगर तुम्हें ज्वाइन करना है हमारे साथ, तो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना दिया है इसमें सभी का, तो व्हाट्सएप ग्रुप आपको अवेलेबल हो जाएगा। और एज अ, अगर आपको लीड बनना है तो उसमें अगले साल गूगल जीडीएससी की तरफ से फॉर्म निकलते हैं हर साल। वो अमन मंसूरी आपको एक बार बता देगा पूरा प्रोसेस क्या होगा उसमें, ठीक है। just तो अगर आपको जीडीएससी लीड बनना है तो उसका पूरा प्रोसेस होता है। आपको ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 साल के लिए ही है, अब हमारे कॉलेज में एस्टेब्लिश हो चुका है तो ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। सो इस साल हमें सेशन भी कराने हैं, हमें तुम्हारी भी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो
हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सेशन के एंड में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया जाएगा, अगर तुम उसमें नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना, सभी और अगर सोशल। हो तो वहीं पर सारे रिसोर्सेज शेयर किए जाएंगे, जो भी इवेंट्स होंगे, अदर जीडीजी के इवेंट्स होंगे, सो यू कैन कनेक्ट विद ऑल एंड ग्रो टुगेदर। कम्युनिटी का मेन मतलब यही होता है कि ऑल विल ग्रो टुगेदर, एक एग्जैक्टली। साथ चलना। तो आई गेस संजना आपका डाउट क्लियर हो गया होगा बेसिकली। और जो लीड का प्रोसेस होता है, आई जस्ट ब्रीफ यू इनटू 3 लाइंस। बेसिकली ये फॉर्म्स ओपन होते हैं मार्च के महीने में, एंड देयर यू हैव टू फिल अप ऑल योर बेसिक डिटेल्स। उसके साथ यू हैव टू शूट अ 2 मिनट वीडियो व्हाई यू आर कैपेबल टू बी अ लीड। एंड उसके साथ शायद इस साल 2 और क्वेश्चंस थे जिसमें आपकी अपनी टेक्नोलॉजी और नॉन टेक के नॉलेज के बारे या में बताना था। प्लस इस साल एक और नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ, और फीचर बोल लो या प्रोसेस में एक और नया एड ऑन बोल लो, जो कि था रिटर्न, सॉरी क्या था आशीष? रिटन टेस्ट, जिसमें हाँ, एप्टीट्यूड। लीडरशिप क्वेश्चंस एंड एप्टीट्यूड क्वेश्चंस आ गए। या सो उसके बाद इफ यू आर क्लियरिंग डेट, देन आपको इंटरव्यू के कॉल आएंगे। डेट इंटरव्यू विल बी 30 to 45 minutes डिपेंड ऑन द इंटरव्यूअर। So after that, the leads announcement will be done in the month of July. Hopefully by July last announce हो जाता है, and the new lead who is elected by the Google, there's a it's a fair process. इसमें आपके कॉलेज का कोई हाथ नहीं है। So basically जो भी बंदा या बंदी बन रहे हैं, they are doing quite better than you guys because उनका non tech and tech, because JDSC is not only about tech. आप ऐसे सोच रहे हो कि हाँ अगर इस बंदे को आता हो कि इसको फुल स्टैक आता है तो ही विल बी, नहीं। ऐसे हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छे टेक में हैं, बट देयर कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट दैट मच, तो उनका सिलेक्शन नहीं होता। सो यू हैव टू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल और नेटवर्किंग स्किल। सो ऑन दिस बेसिस द न्यू लीड इज सेलेक्टेड, सो यू कैन गिव अ ट्राई नेक्स्ट ईयर। एंड वन बोनस पॉइंट इज दैट देयर इज अ रेफरल। सो वो या आपको आपके नॉमिनेशन। लीड या नॉमिनेशन कोड होता है, जो कि आपके लीड, जो भी करंट लीड होते हैं, उनके पास कुछ नंबर ऑफ रेफरल्स आते हैं। तो जो भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स होता है, मे बी फ्रॉम कोर टीम, मे बी फ्रॉम एनीवन ही नोज दैट कॉलेज में ये बच्चा बहुत सिंसियर है एंड ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, so he can just refer you that code, which will give you like a +10 in your whole process. So it will be much beneficial, like with other candidates जिसके पास nomination नहीं है। या एनी अदर क्वेश्चन? Guys, come on यार, 42 of you are there excluding me and Ashish, and info session में I guess या तुम्हें ज़्यादा excited होना चाहिए। Which technologies are you going to learn? What will be the workshop? Which speakers is Ashish planning? Any more like any hackathons is he organizing आपके लिए? और क्या क्या is he going to open any voluntarily positions in the upcoming time? There are many various questions, and this टाइम आई गेस आप जाओगे इस टाइम या में, अभी पूछ नहीं रहे हो, बाद में आशीष को भैया ये बताओ वो बताओ। सो दिस इज द यार हो टाइम मैन। सकता है मैं उस टाइम फ्री ना रहूँ, हाँ अभी फ्री एग्जैक्ट। हूँ, अभी पूछ सकते हो। या एआई एम आई लेके ऑडिबल? आए हो? आशीष एआई लेके आ गए हो क्या? क्या हुआ? हाउ हेलो? कैन जीडीसी हेल्प? हाँ हाँ ब्रो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है। एक्चुअली पता नहीं मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझे मीट नहीं दिखाई दे रही, लेकिन वॉइस आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, चला चला। चिराग, चिराग ने डाउट लिखा है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हाउ कैन जीडीएससी हेल्प फुल फॉर मी? ओके कूल। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि तुम क्लास 11th में हो और तुम्हें जीडीएससी के बारे में पता है, हाँ क्योंकि एटलीस्ट मैं पता जब क्लास 11th में था ना, मुझे कुछ नहीं पता था। जब तुम कॉलेज लेवल पे आओगे तो तुम उस लेवल तक प्रिपेयर हो चुके होगे कि तुम एज अ है। जीडीएससी लीड अप्लाई कर सकते हो, और कर अभी से सकते तुम वो चीजें सीख सकते हो
जो जब तुम अगर यहीं पे मेरिट से हो तो जो यहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं पता होंगी। तो ये तुम्हारे लिए एक एग्जैक्टली। बेनिफिट है। यही बेनिफिट है कि तुम क्लास 11th में हो और तुम्हें ये चीजें पता हैं, और तुम पार्ट एंड हो तुम इस मीट का। एंड चिराग, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आप अनम्यूट करके बात कर सकते तो इट विल बी मच बेटर बिकॉज इट विल बी इंटरेक्टिव. So you can go ahead if you can. Otherwise, you can write on the chats. So hopefully you are in science stream and hopefully you have to computer science. Please clear me these two questions first of all. Sorry for this time. I'll take yours. So sure, no problem. Yeah, my two questions are like hopefully you're in science stream and hopefully you have took up computer science जिसमें आपको Python पढ़ाया जा रहा हो. Is it? No. Okay. So can you just specify us like is it PCMB so that on that basis I can help you with YJDSC and is it I am science student. Okay, cool. And is it like are you a computer science student but have not computer science? Okay, cool. See, if you don't have computer science, that's not a big deal. So hopefully you're aiming for BTech. Hopefully, if yes, then JDSC will help you literally very well. See, yeah, basically BTech is all about technology. So in class 11, if you got to know about Android development, आपके जो Android के apps होते हैं, वो how the backend system works, how those apps are built, how the websites, Facebook, Instagram, Twitter, ये सारे जो आप वेबसाइट चला रहे हो, ये कैसे बिल्ड हुए हैं. मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, अगर कोई आप फ्लिपकार्ट पे एक जूता देख रहे हो एंड इंस्टाग्राम खोलते हो तो उसके ही एड्स दिखा रहे हैं फ्लिपकार्ट्स के. हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग, एटलीस्ट इफ यू हैविंग अ स्मॉल आइडिया. लाइक इन क्लास 11 अभी आपके दोस्त वो बस एंजॉय में लगे होंगे एंड यू आर गेटिंग टू नो what is data science, what is artificial intelligence, what is computers, so what is machine learning. So isn't it helpful for you like before BTech, लोग BTech के फर्स्ट ईयर में जाके सीख रहे हैं. You can be constantly have a chat with आशीष, वो तुम्हें गाइड करते रहेगा. You can learn Python सीख गए तुम्हारा बीटेक का फर्स्ट ईयर में तुम आके पाइथन अगर सीखे हो तो तुम्हें तो बाकी चीजें और इजी हो जाएगी. So as a class 11 student, you are stepping more ahead of others. राइट। क्योंकि मैं This अपना बताऊं तो क्लास 11th में मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे तो सी भी नहीं आती थी, पाइथन भी नहीं आती थी, क्योंकि आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, मुझे कुछ नहीं पता था। बस ये पता था यहाँ बीटेक में कंप्यूटर से हम कुछ कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो मुझे इंटरेस्ट था तो मैंने ज्वाइन की कि हाँ मुझे कंप्यूटर पे काम करना अच्छा है, बस इतना। तो मैं इतना पता है 11th में, वही बहुत है। exactly इट्स yes. वर्थ इट। क्योंकि लोग ऐसे भी होते हैं ना आशीष, जो फाइनल ईयर में आके फुल स्टैक के प्रोजेक्ट्स यूडेमी के कोर्स उठा रहे हैं, 2 घंटे वाले जो प्रोजेक्ट के कोर्स होते हैं, बनाया कि या रेज्यूमे में डालना है. फिर उसके बाद डीएससी का थोड़ा बहुत किए हैं. तो ऐसे ऐसे लोग हैं. राइट तो 11 एंड फाइनल ईयर विच इज अ गैप ऑफ 6 ईयर, अगर जेई का ड्रॉप ले रहे हो तो 1 ईयर, 7 ईयर के गैप, मतलब एक बंदा राइट है जो राइट 7 साल आगे है आपसे और आप हो 7 साल पहले. But you are more ahead of him because by the time you are in final year, you will have a great exposure with a great mind of programming. राइट। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? So, can you suggest any workshop which you are thinking we can organize for you on any other technology, or in which technology are you interested? So, drop in chats or you can unmute and ask us so we can plan for you. Ashish, you're audible.
Anyone, guys? Any workshop, any session, any speaker which you like? आशीष, एक काम करो, बीजीएमआई लगाओ अभी। Yeah. इधर बीजीएमआई लगाओगे ना, फिर ये तभी ये लोग बोलेंगे। यार फोन में कुछ प्रॉब्लम। यार wait, Yeah, Arman, I want to know who is going to take these workshops, like college student or industry experts or the students like us. Rohit, for this I would ask Ashish to tell you because he We would be can, planning up. yeah, we can organize this workshop by some speakers from an industry. According to the workshop, it's a basic workshop, so we can organize it. And if the workshop is on like Google Cloud, so we can invite a speaker from outside who is expert in his field. So it depends on workshop. So that's why I'm asking to you. We have plans, but I want to know what you are thinking, guys. हो सकता है तुम्हारे मन में कुछ हो कि हाँ ये इस चीज पे वर्कशॉप होनी चाहिए। तुम्हारा सब्जेक्ट कोई ऐसा हो जो तुम चाहते हो कि हाँ इसमें कोई मुझे थोड़ा बता दे तो मुझे पता चल जाए। I see Ashish Vishesh has wrote data analytics. So can you just confirm me like what he wants to know about data analytics? I'm My मैं एक Ashish, can you अभी स्पीकर है उनसे कांटेक्ट में हूँ, तो अगर अरेंज होता है तो मैं आशीष से कांटेक्ट करके एक वर्कशॉप कराता हूँ yeah डाटा एनालिटिक्स पे। Yeah, that's yeah great. That's great. हाँ, Ashish will coordinate और with you. डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस इज अ बूस्ट अप फील्ड फॉर द फ्यूचर। yeah can you please tell me the teacher name? हेलो। मेरा हेलो, phone- हाँ आशीष कुछ बोल रहे थे? हाँ हाँ can you please tell me the teacher name विशेष? अभी मैं टीचर बताता हूँ, स्पीकर जैसे you are दो coming. तीन स्पीकर हैं। इंडस्ट्रियल मतलब टीचर नहीं है वो, एक रियल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बोल सकते हो, Okay वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो अगर वो okay उनसे टाइम निकल पाता है तो मैं बताता हूँ जल्दी कांटेक्ट करके, okay तो एक okay okay प्रॉपर वर्कशॉप अरेंज कराते हैं फिर हम। okay 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 we can talk on this topic later. Any other question, guys, or we can wrap up? पूछो यार पूछो, आज टाइम मिल रहा है पूछने का, फिर पता चले ना मिले। मैं भी बिजी रहता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा। मीट में हमारे जूनियर्स हैं इतने सारे, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो हाँ पूछो यार। कोई भी कोई ये भी मत किसी सोचो का कि कोई क्या इंडस्ट्री सोचेगा। मतलब रिलेटेड फील्ड हो तो उसके बारे में बता सकते हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग कोई स्पीकर कनेक्ट कर पाए। तो किसी का भी इंडस्ट्री में कुछ इंटरेस्ट है कि इस फील्ड में अगर कोई स्पीकर उसे गाइड कर पाए या फिर कुछ हेल्प कर पाए तो बता सकता है अपना इंटरेस्ट किस में रहेगा। Ashu, I can come back in 2 minutes. Actually, my phone has some problem. तो Sure, मुझे ना sure. क्वेश्चन हो रहे ना मीट शो हो रही। Yeah, I'll just take over for that time. अरमान, I'll just, yeah, sure, sure. check the chat section. There is Uh, a question for you. sure. Out of the core team, please explain the benefit of GDSC for members. Basically, members. Rohit, can you just unmute yourself? I'd love to hear the question. Like, can you just elaborate the question? Till then, I'll just take up Swastik question. Working in Python language past 3 to 4 years. स्वस्तिक, इट्स नॉट पाइथन इजी है, और बहुत सारे जो भी लोग कहते हैं ना, तो सी, इफ पाइथन इजी होता, इजी है, ठीक है,
मैंने ये नहीं कह रहा इजी नहीं है, बट सी why Python is used vastly in generative AI, ML, deep learning. कभी तुम लोगों ने ये सोचा है कि क्यों? Because already those algorithms are so complex. If we are taking C++ और C++ अगर तुमने किया हो थोड़ा भी, वहां पे अगर एक कोमा मिस होता है, एक हाइफन मिस हो गई, एक तुम्हारा सिंटेक्स एरर होने से वो पूरा कोड रन नहीं होगा. सो लेट पीपल से कि पाइथन इजी है, तुम ये फॉरगेट इट. बट stick you said like will I continue with this or I have to prefer C++? uh so I think it depends on what your current goal. Like if you're going in the phase of AI ML, then you can stick with Python. If you're planning as a to apply as a SD full stack developer, so you have to switch over to C++ or Java, because you can do DSA in Python also, but most of the companies don't prefer DSA in Python. So most of the companies prefer in C++ or Java. So Yeah. this is the thing. And संजना कॉलेज में आशीष, संजना का क्वेश्चन है, कॉलेज में इसके बारे में पता करने के लिए किससे कांटेक्ट करना होगा? संजना, कॉलेज में आप किसी भी कोर टीम मेंबर से कांटेक्ट कर सकते हो इसके बारे में और भी जानने के लिए, ठीक है? बाकी हम कांटेक्ट में रहेंगे ही, और जो कोर टीम मेंबर्स हैं वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों ईयर में से रहेंगे, तो कुछ तुम्हारे फ्रेंड्स भी होंगे, तो आप इजीली कांटेक्ट कर पाओगे. एम आई क्लियर? Yeah, Rohit, you raised your hand. You can unmute yourself. Yeah, Arman, I want to add something. Sure. Like what the question was is, will I prefer C++, Java, or Python? So, Swasti, my advice for you is that never go with Python if you are trying for product-based company, because if you go with Python, then the working professional over there, they're working in Python from 10 to 12 hours, so they know more than you. And Python is a very vast library, so it will create problem for you. Yeah, So that's what. Like it prefer C++ totally or Java because they have limited exactly. questions, right? Also not for questions and all, but I would prefer on a longer rest. That it totally depends on how she's planning his career, because Yeah, if he's planning Right. for ML engineer, so he can't like divert himself to C++ DSA, because DSA will help him at one go, but C++ for an ML engineer has no use. But w- either if he is going for a full stack development as a software development engineer, so for that he have to go for C++ or Java in DSA, because it totally, as I said, totally depends on him what his planning is. ML engineer has a different role, data analytics has a different role, data scientist got different role. Even nowadays, I'll just clear one myth, Rohit, that product based company these days are hiring for Python developers, not yeah, directly as a Python developer, but as a data scientist, as a research intern. But right now the scope is not actually open for bachelors, it's mostly masters. But yeah, the openings are coming up, because recently even I filled a form for Microsoft which was for data scientist internship. So I have been in the AI ML domain from last 2 to 3 years. So I have the exposure that many companies are coming up with, because today's world is totally rely on data. yeah, Right now every company is implementing AI ML, and even some companies they are implementing neural networks. And right now how generative AI has boom up. So yeah. currently, it's totally like for him, I would suggest him, whatever your goal is, you just first check out the roadmap of the example. You are going for a data scientist, you check out the roadmap, and on that basis you judge instead of listening to other people. Bro, Because sorry to yeah, interrupt you. yes, yes, sir, no problem. I am currently developing as a working as a software developer for different industries. Yeah, yeah, that's great. But I develop a library in Python.
So I want to ask that why we stick to Java or C++ instead of Python? If we Why can done that work in Python, so why we go to C++ or Java? see, nowadays the not exactly we are stick to C++ or Java, but yeah, slowly the things are coming up. Python is coming up in the frame because if you have check out the history, C++ was the first one, and followed by Java. Java came because Java was more secure. Yeah, much secure because you know that people who are deploying these viruses and all malwares, they use C++ language because there's a loop. Everyone who has worked in C++ knows the loop because pointer. You know that because of pointer, anyone can take the base address, and because of the base address, you can inject any virus in the memory allocation where the memory is allocated, right? So right now, I would say that not exactly prefer, but yeah, Python is coming up, but it will take some time. As far as what knowledge I have gained in my past 2 to 3 years of experience. So I want to There be is an one more HTML engineer in reason my we future. can't use. So can you elaborate the roadmap as you Sorry. are working as an AI ML developer? So can you elaborate me for it? So I be a AI ML developer for in future. Yeah, so for AIML, like basically, there are many fields. Okay, for in AIML also, there are data scientists, ML engineer, data analytics, data engineer, ML engineer, I said AI engineer, research intern. There are many. So first of all, too, you have to go with your basic Python, and followed by the libraries, Pandas, NumPy, and after that, you have to check out with the supervised learning, unsupervised learning, and followed by the decision tree based theorem, and with getting to more depth, you will start with deep learning. So example, if you're going for a data scientist, so in data scientist the roadmap will be mostly in Python, and followed by you'll go for statistics, that is matplotlib, followed by Panda, NumPy. This will be much helpful. So for that, I'll just suggest you a website. Just let me at the website. You'll get a detailed roadmap out there where you can find your interests, and it will be helpful for everyone out here. Mm, yeah, this website. Check out this website. You will get, if you're a front end developer, if you're a back end developer, if you're a data scientist, if you're planning for cybersecurity, or a AI, AI engineer. Everything is explained in detail out here. I might miss something here, but this website, you just bookmark in your web Chrome, so that it will be helpful for you in the future. For first year students, second year students, it's must. I must say that please bookmark this page. And another question that there is an different libraries in Python, right, like TensorFlow Mhm, and PyTorch. So mhm. what you prefer for best? And what I prefer for development in my ML technologies and ML models. See, for that, Swastik, the first thing is that I have to know, like, example, my domain is right now, I said I'm working in CNN, that is convolutional neural network. So for me, the libraries which right now I'm using is TensorFlow, I'm using PyTorch, I'm using NumPy, Pandas, and Keras and Seaborn. These some libraries are there which are most helpful for my projects, for my data set. So it will depend on the data set and the project which you are taking up, which libraries will be helpful for you, because some data sets are there where you have to visualize. Like recently I was working on a project which was on skin cancer detection, where I used YOLO version 8 for with PyTorch was used to clear the image, to check out the cancer cell which I used to detect. So like that, you have to understand the problem statement, and based on that, you have to uh, decide which libraries will be used, because you can't use everywhere every libraries, right? Yeah, Yeah. yeah, Arman is right. As I'm working in DRDO as a research intern, so
according to data, we are using MNE library. I don't have the knowledge of MNE library, but according to the data, only MNE library is visualizing that data, working on that data, and processing of data is done only MNE. So I can learn that library. So data. So the library depends on the data which you are working on. And Ashish, the one good thing about AIML is that either you are a 10-year experienced guy or either you're a freshie. You never know whenever you have to learn a new library because Yeah, yeah. it depends on the problem statement. Right now, yeah, one more thing I would like to suggest you guys, SIH Smart India Hackathon is scheduled by 31st September. Please do part. And I checked out Ashish in SIH, there were many problem statements which were based on AIML, and some problem statements were there where we can't use PyTorch. We have to use TensorFlow. Some were there where we have to use Matplotlib. We can't use Seaborn. So, like after practicing for a year, 6 months, doing some projects, you will understand. अच्छा, इसमें तो मुझे अच्छा इसमें पांडा लगेगा, numpy लगेगा, प्री प्रोसेस कराऊंगा और TensorFlow यूज करके मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा. So at one time, after 6 months, 1 year, 1.5 years, you will understand. अच्छा ये वाली लाइब्रेरी ढूंढ लेता हूँ, वो वाला लाइब्रेरी ढूंढ लेता हूँ. As I said, skin cancer detection. I was tense. I was doing with TensorFlow, but the output was not executing. When I switch over to PyTorch, within 2 days my model was ready, and the data set was just carried out by YOLO version 8. So it totally depends on the problem statement. And the best part is that you are learning every day. Right. Okay, okay. Thank you. Yeah, Thank you no so much problem. for your guidance. Any questions, guys? Or we can wrap up this session. Yeah. So now we can wrap up this session. Thank you, Arman, for your informative speech. So Thank you so everyone, much, Ashish, for we having are me. planning something interesting for you where you can learn a lot. So the first workshop we are planning for you is Google Cloud Study Jam. So are you interested to learn about Google Cloud? Yes, we are Write in interested chat. and so excited. This is the complete plan we have from the side of Google for the workshop. They are planning for you, and we can also organize the workshop according to you. It's not fixed. If you want to connect with us, you can also follow the GDSC platform link, scan this QR code, or scan this link tree. In the link tree, you got all the links like GDSC platform, WhatsApp group link, or LinkedIn, Twitter, and Instagram page link. You can also DM us on Instagram, Twitter, and any other platform. So, guys, are you scanning it or take a snap? So, this part we covered. So, thank you guys for joining us, and congratulations again to be the part of GDSC community. Thank you, everyone. Thank you so much.